बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की बियोलॉजी का गैस पेपर आप लोगों के साथ अथेंटिक गैस पेपर जो है वो शेयर करूँगा। चाहे आप लोगों का ताल्लुक जो है वो जिस बोर्ड से मर्ज़ी है, आप अगर ज़हीन स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं या वीक स्टूडेंट हैं, तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए गैस पेपर जो है वो एक जैसा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंशाल्लाह पूरा पेपर जो है इसी में से आप लोगों का लग जाएगा। पेपर सेटर जो हैं जिन्होंने पेपर बनाया है उनके माइंड को मद्देनज़र रख कर ये जो है गैस पेपर तैयार किया गया है, तो लाजमी ये वीडियो भी पूरी देखें। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट्स की गैस पेपर जो हैं वो शेयर हो चुके हैं, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में प्ले लिस्ट नज़र आएगी, वहाँ से आप लोग देख पाएंगे। तो पहले शार्ट क्वेश्चन फिर लॉन्ग क्वेश्चन, पेयरिंग स्कीम जो है वो भी जल्द शेयर करूंगा, तो उसी के मुताबिक आप लॉन्ग क्वेश्चन कीजिएगा। शार्ट क्वेश्चन मैं पूरी बुक के जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 1, what are bioelements, give their portion in body, what is community, compare organelle and organ, define environmental biology, define biome, difference between deductive and inductive reasoning, what is biological control, what is phyletic lineage, what do you know about gene therapy, define population and give an example. Chapter number 2, describe different types of RNA molecule, draw peptide linkage between glycine and alanine, how fibrous protein differ from globular protein, what are anabolic and catabolic reactions, what is specific heat capacity, write general formula of amino acid, what are conjugated molecules, give example, what F. Sanger concluded did about insulin, what is percentage of glucose in healthy person body, what do you know about vaccines, give their chemical composition. फिर चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन, define apoenzyme and prosthetic group, define enzyme inhibitor, give two types, define feedback inhibition of enzymes with diagram, difference between competitive and non-competitive inhibitors, what is active site, what are its two regions, what is cofactor, give its steps, write down characteristics of enzyme, define lock and key model of enzyme and reduce fit model, how enzyme substrate complex is formed, what is optical value of factor during reaction. Chapter number 4 है फिर who is discover cell theory, what is cell fractionation, define resolution of I, what is fluid mosaic model of cell membrane, what is endocytosis, difference between phagocytosis and pinocytosis, what are castrane, what are peroxisomes, give their function, difference between chromoplast, leucoplast, write down two functions of Golgi complex, what are storage diseases, give an example, define polysomes, what is nucleus, give its function, describes silent feature of cell theory, give role of vacuole in plant cell, what are the subunits, how their attachment is controlled, how intermediate filaments support cell wall. Define पांचवा चैप्टर, डिफाइन species, what are rules of binomial nomenclature, difference between parents and variants, write four characteristics of viruses, define obligate intracellular parasite, explain briefly pox viruses, write a short note on HDS, what is capsid and capsomers, what are oncoviruses, what is prophage and lysogeny. उसके बाद चैप्टर नंबर 6, डिफाइन वाटर ब्लूम, व्हाट इज देयर इफेक्ट्स ऑन एनिमल, डिफरेंस बिटवीन एंटीसिपेटिक्स फ्रॉम disinfectants, difference between lag phase and log phase of growth of bacteria, difference between spore and cyst, give two example of chemosynthetic bacteria, what are gram positive bacteria, what are pili, give their function, what are streptobacilli, what are super blue green algae, write down medical importance of bacteria, what is conjugation, what are amphitrichos और लोफोट्राइकोस एंड पेरिट्राइकोस बैक्टीरिया. उसके बाद यूनिट नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन डाई एटम्स एंड डाई नोफ्लेजेलेट्स, what are foraminiferans and antinobods, what are limestone deposits, how they are formed, what is giant amobia, what is red tide, how they are formed, write two characteristics of ciliate, how algae differ from plants, what are water molds, or write two benefits of algae and fungi, what is chlorella, give its importance, what are canoflagellates, what are kelps, what are trichomophos, how flagellates obtain food. Unit number 8, what is fungi, explain why non-separate hyphae are called
coanesthetic hyphae define nuclear mitosis in fungi, difference between rust, smut, difference between lichens and mycorrhizae, how spores are different from conidia, what are aflatoxin, what is mycelium, what is meant by parasexuality, give its importance, what are symptoms of ergotism, what are toadstools, give example, difference between budding and fragmentation in fungi. उसके बाद number 9, what is a phylogenetic system of classification? Write four characteristics of bryophyta. Give four example of funds. Difference between homospora and heterospora. Difference between macrophyles and megaphylls. Difference between leaf venation and circinate venation. What are gymnosperm and angiosperms? What advanced characters are present in sporophyte of Anthocera, right? Scientific name and family of tomato and sisho, right? Two strips involved in evaluation of seed. How integuments is formed, define all and embryo sac. What are fronds? What is proteinemia? In which group of bryophytes they are produced? Number 10. Define placenta. What is its formation? Define skeleton of sponge. डिफरेंस लिखना है आप लोगों ने कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स का, और डिफरेंस लिखना है डेप्लोब्लास्टिक एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम नेमाटोड और थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम जो है प्लेट हेलमिनेट्स, और नेम फाइलम ऑफ स्टारफिश. इसकी इम्पोर्टेंस जो लिखा हुआ है देख लीजिएगा. कुछ अल्फाज जो जल्दी में मैं जो है उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत हो रही है, तो आप लोग लिखा हुआ सामने तो इनको देख लीजिएगा. तो ये आप लोगों का यूनिट नंबर 10 के क्वेश्चंस कुछ 15. फिर यूनिट नंबर 11, तो डिफाइन बायोएनर्जेटिक्स, डिफाइन फोटोसिंथेसिस विद इक्वेशन, एंड photosphorylation, what are accessory pigments, what are photosystem and their types, give importance of ATP, difference between photolysis and glycolysis, difference between chlorophyll and chlorophyll B, A or B, define chemosomesis, what is that scheme of. उसके बाद यूनिट नंबर 12, तो इसके डिफाइन डिटरेटिव्स, डिफाइन डाइजेशन एंड इजेशन, और बाकी जो है ये भी आप लोग इनके क्वेश्चन जो है वो देख लें. ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करता हूँ. तो ये यूनिट नंबर 12 के 15 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस. उसके बाद यूनिट नंबर 13, तो गैसेस एक्सचेंज वाले, तो ये जो है गैसेस एक्सचेंज वाले 12 शॉर्ट क्वेश्चन. फिर यूनिट नंबर 14 के जो है आप लोगों को 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे. बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, तो इनको भी देख लें. उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, तो पहला चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज क्लोनिंग, डिस्कस इट्स मेथड एंड एप्लीकेशंस, राइट अ नोट ऑन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट ऑर्गन सिस्टम एंड सेल लेवल, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट ऑर्गन सिस्टम लेवल. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 14 से, गिव एट एनी 8 फंक्शन ऑफ ब्लड, गिव वेरियस कंपोनेंट्स एंड फंक्शन ऑफ lymphatic system, what is transpiration, give the factor affecting rate of transpiration, और डिस्कस ट्रांसपरेशन एज आ नेसेसरी इवल्स. यूनिट नंबर 2 से डिस्क्राइब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, राइट द वाटसन एंड क्रैक मॉडल ऑफ DNA, व्हाट आर पॉलीसेकेराइड, डिस्कस स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इन डिटेल, डिस्क्राइब प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. फिर यूनिट नंबर 8 डिस्कस asexual reproduction in fungi, describe with example different ways in which fungi are useful to human, explain taxonomic table of fungi, explain mutualistic nutrition in fungi. फिर यूनिट नंबर 6 डिस्कस न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, और एक्सप्लेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया विद स्पेशल रेफरेंस टू नोस्टॉक, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन इन नोस्टॉक, एक्सप्लेन अबाउट यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. उसके बाद चैप्टर नंबर 6 गिव डिटेल लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम एंड स्केच इट, राइट मेन स्टेप्स ऑफ evolution of seed, discuss evolution of megaphys leaf, describe economic importance of poaceae, or what adaptation made by bryophytes to live on land.
तो ये डियर स्टूडेंट्स आसान से 3 पेयर हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के, बस इन्हीं को कर लीजिएगा, आपका पेपर हो जाएगा। बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वो पास पेपर से जिन चैप्टर्स के जो है रिपीट हो रहे होंगे क्वेश्चन वो कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बाकी प्ले लिस्ट आप लोगों को नज़र आ रही होगी, यहाँ से मुकम्मल गैस पेपर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।